shares and dividends can give you amazing outputs in your real life, giving you a financial freedom at a very young age. So if you want to get financially independent at a very young age, please pay attention to this video. Hey learners, this is Dr. Rishi from the Learners Academy, and today we are going to talk about shares and dividends. Shares and dividends are taught for class 10th ICSE. This topic is a very interesting topic and is very useful in our real lives as well, because shares and dividends can give you amazing outputs in your real life, giving you a financial freedom at a very young age. So if you want to get financially independent at a very young age, please pay attention to this video. Let us go ahead and see what shares and dividends are, how the system works, and how we can get profit from this particular sector in finance. So let us first understand what is the meaning of a share. So suppose I am running a small business where I am manufacturing a textile. Now I have a very small company, so I get raw material from other people and I manufacture the shirts and the pants, and then I sell it to the stores. Now this is the system that I am following. Now I want to expand my business. So I think of setting up a factory to manufacture the textile itself. So now I won't be buying textile as a raw material from a company. Rather, I would be manufacturing my own raw material. I have some amount of money that I have saved over the past few years, and I want to start this factory. What am I going to do? First thing I need to do is register my company on the share market. There are various brokers who would be doing it. There are various agents who would be doing it for me. I have got my company registered with the share market. Now what happens? I offer to sell shares of my company under IPO, which stands for Initial Public Offering. So this is the basic cost of the share that the person would be paying. So whenever a person would be applying for something called as an IPO, they will have to buy the shares in a specific number of quantities. Say some companies do it, say 50 shares, some do it in 100 shares, some do it in 150 or even 250 shares. Now, the share holder is going to send his money to the share market. The share market, when we say share market, we refer to something called as the stock exchanges. So what is the stock exchange? The stock exchanges are basically a place where the shares are bought or sold. There are two major stock exchanges in India. First is NSE and second is BSE. Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. So BSE stands for Bombay Stock Exchange and NSE stands for National Stock Exchange. So these are the places where the shares are either bought or sold or transferred from one person to another, one company to another company, one company to another person, or one person to another company. So whatever is going to happen regarding the shares is going to happen through either BSE or NSE only. There is an organization called SEBI. SEBI stands for Securities and Exchange Board of India. So this is a governmental organization which regulates the share markets, both of them, the NSE and the BSE. So if someone does some malfunctioning or some malpractice in shares or dividends, SEBI would be the one who would be taking care of it, and a grievance could be sent to them. Now, so we've seen what happens when I have to set up a company. We went tangential in explaining the basics of the share market. Let's come back to IPOs or initial public offerings.
this is the amount that the shareholder is going to pay. Now, whom is the shareholder going to pay this to? They are going to pay it to the exchanges, either the BSE or the NSE, because my company is registered with NSE or BSE, and then from them the money would be rerouted to my company. Now, I develop the company, so I give out shares. So say initially me and my family had something like, say, 55 to 60% of the shares, or for that matter 80% of the shares, I had kept it with my family, and 20% I had sent it into IPOs. Suppose, let's take a hypothetical example that I needed around 100 crores to set up the company. So if I have 100 crores, so I needed this 100 crores to set up my company. I'm saying that I have 80% of it, meaning I have 80 CR with me, 80 crores with me. Now I need the remaining 20 crores. Where am I going to get it? I say that I'll register my company with the Bombay Stock Exchange or the National Stock Exchange, or both for that matter, and then I can go ahead with selling the share of the company. So I'm selling 20% of the share. How am I going to sell it? Under the name of IPO, I will be selling these shares. Now, what happens after that? I can say I need 20 crores, so I have divided the shares into smaller pieces. Now, this is where the interesting part comes in. The shares are divided into very small pieces. So, say I can sell the share at, say, something like 10, 15, 20, 25 rupees, or even 30 rupees, or 100 rupees, 150 rupees, so on and so forth. So I would keep the value small so that I can have larger number of shares. Many people can buy it. Now, if many people buy the shares, it would always help me as the promoter or as the owner of the company. What it would do is it would always give me a monopoly, because I am the major stakeholder in that particular company. So now what happens? This 20 crores, say we have say something like 20 lakh shares, or 20 lakh shares, 100 rupees would be the cost of each share. They could be sold out under IPO. Now people would buy these shares. So I would be getting this amount. Now obviously there would be certain charges, certain taxes that would be deducted and all, and I would be getting a certain amount in my account, in my company's account, not my account, but the company's account. And then I can start the company, and then I start making profits. Now, when I make profits, I share it with the shareholders. So at the end of every year, there are two ways under which the profits would be given. तो कैसे दे सकते हैं प्रॉफिट? ये दो वे से दे सकते हैं. एक वे है इन कैश, दे कैन स्ट्रेट अवे पे से कि 10% प्रॉफिट हो गया है, एंड देन they would be giving 10% on the sum that has been invested as cash. Other things that some companies do, they give number of shares. So they say, क्योंकि आपका जितना भी प्रॉफिट हुआ है, इसे 10% प्रॉफिट हुआ है, तो इतने इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो अपन इतने इतने शेयर्स शेयर होल्डर को दे देंगे. So this would increase the number of shares, and if my number of shares increase, my profit will also increase. So now from the investor's point of view, both the ways investor is getting profit, because on an average majority of the companies would be paying anything between 8% to 20% of dividend, depending on which company we are talking about. However, there are also risks associated with it, because we are going to get profit as shareholders if the company makes profit. If the company doesn't make profit, if the company is at loss, then obviously the value of the shares would reduce. This is the catch here. That is, we can make money if the company is making money. We won't be making money if the company is not making money. ये ध्यान में रखना जरूरी है. Therefore,
every time they talk about, whenever we talk about share market or shares or securities or equities, they mean exactly the same thing. So shares, equity or securities would mean exactly the same thing. In all these cases, there is always a disclaimer saying that it is subject to the market risk. It might happen that there is recession in the market and the share prices drop down. If share prices drop down, obviously people who have invested money would lose their money. So this is the risk factor that is there. So now this was basically ये सब मोटा मोटा है कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है. Now obviously I am not a financial expert. I have given it as a 10 in an easy way so that a 10th grader could understand कि basically ये शेयर का सिस्टम है, ऐसा ये काम करता है. So this year we are going to study for 10th ICSE about the basics of shares and dividends. Please don't take it as advice where you'd start investing in the share markets from tomorrow. This is an educational lecture where we are basically talking about कि एक सिस्टम काम कैसा करता है. Obviously you should know the basics. आप आगे जाकर there are financial experts who can help you, guide you through this. तो अपन ने मोटा मोटा देख लिया कि मेरे को 100 करोड़ का कंपनी बनाना है, 20 करोड़ की जरूरत है, 20 करोड़ का मैंने 20 लाख शेयर्स बनाए, 100 रुपए का एक शेयर, I sold it under IPO. Now I've got the money, I've started the company, my company makes profit, the investors are going to get the profit, my company is at loss, the investors would be going at a loss. So we know what shares are. Now let us talk about the terms that are associated with shares. So the first term that is associated with the shares is the face value of the share. तो इस केस में face value होगा 100 rupees जो उसके ऊपर printed है. That is the value at which the share has been sold, okay, by the company to the first investor. Okay, पुराने जमाने में share certificates आते थे. So there were physical certificates where this value was mentioned. So that's why the name comes face value. Currently, we don't have any physical shares as such. Yes, it is there in the form of e-shares. So yes, whenever you buy a share from a broker, now obviously you cannot directly go to the exchange and buy the share from it. You need a broker who would be buying the share for you from the exchange. So the exchange knows that they have sold the share to a particular broker and the broker knows that you have the share or you are the owner of the share. Some examples of brokers: Angel Broking, Zerodha, Kotak Neo. So these are the examples of brokers who would be buying or selling shares for you. Now, let's go ahead and check out what happens after this. So we were talking about the face value. The face value of this share is, so here the face value is equal to rupees 100 because we are selling 20 lakh shares. 100 shares would give me 20 crores. Okay. So ये चीज ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मोटा मोटा 100 रुपीज की वैल्यू है जो वो शेयर सर्टिफिकेट पे आएगी या फिर आपके आईपीओ केस में आएगी. ओके, अभी इसके बाद क्या होता है? ओके, नाउ इफ द कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट, सो अगले साल कंपनी ने बहुत, अभी मेरी कंपनी है, मैंने जम के काम किया, अगले साल बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है एंड आई हैव गिवन अ डिविडेंड ऑफ 15%. Okay, so if let us have someone say Raju has say 1000 shares, then we have Ramesh, he has taken say 500 shares, and we say have Sushma and she has taken again say 300 shares.
राजू ने 1000 shares लिए, so his investment would be 1 lakh rupees, 100 multiplied by 1000. रमेश ने 500 shares लिए है, so his investment would be 50,000 और सुषमा की होगी 30,000. Okay? तो अभी I have given a 15% का dividend. So not me but my company has given a 15% का dividend. So जिसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, he has ended up with rupees 15,000 as a dividend. This guy got 7,500 rupees and she got so it is 15 rupees for one share, so it would be 4,500 rupees. So it is interesting to understand that Raju ended up investing more and ended up earning more. Now what happens? Now my company is making profit. Now everyone wants profits. So everyone wants profit making shares. So now if you want to buy these shares, are these people willing to sell the shares at 100 rupees? Absolutely no, because the company is making a lot of profit. So what are they going to say? Now this again depends on the exchange. So there is live buying and selling going on. There is a number that can go up and down. The price of the share would keep on changing or fluctuating. So Raju says that I would sell the share at 150 only. I would not be selling the share anything below 150. So this rupees 150 becomes the market value of the share, because there is only one guy who's willing to sell the share from these three people, that is Raju, and he is selling it at 150 rupees. Other are long-term investors, so they are saying that हमको बेचना ही नहीं है. Okay? Now what does this do? It's all about the demand and supply. इधर shares का supply 0 है. We've got only one guy, उसके पास 1000 shares है, वो भी बेच रहा है 150 को. Company is making a lot of profit, so everyone else is interested in buying it. So there would be a lot of people who would be interested to buy these shares जिनका value था 100 rupees at 150 rupees. अगर ऐसा होता है तो इस सिस्टम को अपन बोलेंगे the share is sold at a premium, meaning शेयर का वैल्यू था 100 रुपए पर कोई बेच रहा है उसको 150 रुपए में, प्राइस एलिवेट करके, और फिर भी लोग उसको बाय कर रहे हैं. तो वी से दैट द शेयर इज एट प्रीमियम. ओके, अभी राजू ने कुछ शेयर्स बेच दिए, मे बी ही सोल्ड 500 ऑफ हिज शेयर्स, उसके पास अभी 500 शेयर्स बाकी है. अभी आगे क्या हो रहा है? नेक्स्ट ईयर अगेन आई मेक मोर प्रॉफिट. नाउ व्हाट हैपेंस? नाउ अगेन मैंने भी डिविडेंड दे दिया है, डिविडेंड फिर से 15% मिल गया, तो लोगों को ये एक साल में मिल गया वापस फिर से एक बार. तो डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट दैट दे हैव इन्वेस्टेड, डिविडेंड उनको मिल गया. मेरे शेयर की वैल्यू या फिर मेरे कंपनी के शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है विद एवरी कमिंग ईयर. व्हाई? बिकॉज द कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट. सो फिर वो 150 से 200 हो गई, 200 से 250 हो गई, 250 से 300 हो गई, 300 से 400 हो गई, 400 से 500 हो गई, 500 से 1000 हो गई. It keeps on increasing. Okay? Because I am putting in my efforts. I am working 100%, or rather I am giving 150% to make sure that my company is earning a lot of money. Now, if I or my company earns a lot of money, so the stakeholders would also end up earning a lot of money. अभी अपन फिर से स्टार्टिंग में जाएंगे तो 80% ऑफ शेयर्स आर स्टिल विथ मी. नाउ आई से दैट ओके, तो अभी मैं इसको और थोड़ा बेच देता हूँ. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ माई शेयर्स? इट इज स्टिल 100 रुपीज. व्हाट इज दैट इज माई फेस वैल्यू. व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स? अपन ने देखा 10 साल बाद वो मार्केट वैल्यू 100 रुपए की 1000 रुपए हो गई है. मेरे पास जो शेयर है उसका फेस वैल्यू अभी भी 100 रुपीज है, मार्केट वैल्यू 1000 रुपीज है. इफ आई से दैट आई विल बी सेंडिंग I'll be liquefying, again a term, liquefying और liquidity करेंगे, तो क्या करेंगे? तो वो
लिक्विफाई करेंगे मतलब क्या, वो शेयर को मैं बेच दूंगा. ओके, आई विल से दैट आई विल 10% शेयर जो है मेरे पास वो मैं बेच दूंगा. ओके, 10% शेयर मतलब 8 करोड़ के शेयर, बिकॉज 80% मेरे पास 80 करोड़ के शेयर्स थे, उसमें से 10% मतलब 8 करोड़ के शेयर मैं बेच रहा हूँ. यस, 8 करोड़ के कितने शेयर्स आ रहे थे जब अपन ने चालू किया था, मेरा फेस वैल्यू था 100 रुपीज, तो 8 करोड़ में आ जाएंगे 8 लाख शेयर्स. तो भी मैं 8 लाख शेयर्स बेच रहा हूं एट द कॉस्ट ऑफ 1000 रुपीज ईच. ओके, सो आई हैव एंडेड अप अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट इन दिस. My company profits even more, and 20 years down the line, जो cost of share है, it has become say something like 2500 rupees per share. Okay, अभी एक प्रॉब्लम हो रहा है. ओके, अभी लोग मेरे शेयर्स बाय कर रहे हैं, दे आर स्टिल वांटिंग टू बाय इट बिकॉज माय कंपनी इज गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट. ओके, अभी कुछ डिसीजंस हो जाते हैं कंपनी में. आई रिटायर अर्ली, I sell the company to someone, something like this happens. Now, अब सारी चीजें चेंज हो गई है. अभी डिविडेंड उतना आ नहीं रहा, प्रॉफिट उतना नहीं आ रहा, डिविडेंड उतना नहीं आ रहा. दिस इज 20 years from now. Okay, and the company starts getting into losses. अब क्या होगा? कुछ लोगों ने मेरे शेयर्स खरीदे हैं 2500 या फिर 2500 रुपीज़ को एक शेयर खरीदा है. नाउ प्रॉफिट नहीं आ रहा, एक साल में प्रॉफिट नहीं आया, लॉस हो गया कंपनी को, तो भी वो लॉस किससे कटेगा? तो उसकी शेयर वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी. सो वो 2500 का शेयर था, वो 2000 हो गया, फिर 1500 हो गया, फिर 1000 हो गया, फिर और नीचे आ गया. There have been quite a bit of companies जिनके शेयर जैसे ड्रास्टिकली नीचे आ गए हैं. आई थिंक सत्यम इज वन ऑफ दम, सत्यम कंप्यूटर्स इज वन ऑफ दम. ओके, जिनके शेयर्स ड्रास्टिकली नीचे आ गए थे और उसकी वजह से बहुत बड़ा क्रंच हो गया था. तो रादर मार्केट फेल डाउन बिकॉज शेयर एकदम धड़ाम से नीचे आ गए. अभी 30 years डाउन द लाइन या फिर 25 years डाउन द लाइन मैंने तो कंपनी छोड़ दी है, मैंने तो आई स्टिल हैव I have left the company, so I've given out those, I've sold out those 80% of the shares that I had. सब बेच बाच के I am nicely retired. मैं किधर तो मस्त मजा कर रहा है. The new guy who has bought the company has not worked hard, or he has made some bad decisions. One of the two has happened. Okay, now so because of that person who's not working, कंपनी लॉस में जा रही है. कुछ तो कारण होगा. सो हु टू ब्लेम? लेट्स पुट इट, द हायर मैनेजमेंट हैज डन सम स्टूपिड डिसीजंस एंड एवरीथिंग हैज गॉन डाउन द लाइन. अभी कंपनी का शेयर जो है उसका वैल्यू हो गया है 80 रुपीज. अभी मार्केट वैल्यू हो गया है ₹80. मेरा फेस वैल्यू था 100 रुपीज, मार्केट वैल्यू हो गया 80 रुपीज. ओके, मतलब क्या? द शेयर इज सोल्ड एट डिस्काउंट. तो ये सिनारियो को बोलेंगे द शेयर इज सोल्ड एट डिस्काउंट, वेयर द मार्केट वैल्यू इज लेस देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द शेयर. एक्चुअल वैल्यू कितना था? 100 रुपए. बेच कितने को रहा है अभी? 80 रुपए. ये भाई साहब जो थे, इनके पास कुछ कुछ शेयर्स थे, इनमें से सबने तो बेच दिए शेयर, पर रमेश थोड़ा ज्यादा होशियार था, तो सुषमा ने भी बेच दिया 80 पे, और ये राजू ने भी बेच दिया. बोले यार इससे लॉस होने से तो अच्छा है कि इसको बेच बाच के अपन एटलीस्ट विल गेट सम मनी आउट ऑफ इट. ओके, या ये भाई साहब के पास अभी भी 500 शेयर्स है. अब आगे क्या होगा? अगर ये कंपनी में और ज्यादा नुकसान होगा, द शेयर वैल्यूज वुड फर्दर रिड्यूस, एंड देन maybe it would stagger around at say 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, and it would sit there. There won't be much happening in the company. The company might file for bankruptcy. Bankrupt हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी. ओके, तो अपन ने क्या सीखा? जब मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी फेस वैल्यू से, it would be said that the share is at premium.
अगर मार्केट वैल्यू कम होगी विल से दैट द शेयर इज एट डिस्काउंट, अगर सेम होगा तो उसे बोला जाएगा द शेयर इज सोल्ड एट पार। सो अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू सेम है द शेयर इज सोल्ड एट पार, मार्केट वैल्यू शेयर फेस वैल्यू से ज्यादा है शेयर इज सोल्ड एट प्रीमियम, एंड मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम है देन शेयर इज सोल्ड एट डिस्काउंट। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है when we are solving these examples particularly for 10th ICSE, because यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम पे वो डायरेक्टली बोल देंगे the share is sold at 10% discount, या फिर the share is sold at so and so price and face value the face value is so and so and the market value is so and so. By comparing them you should be able to figure out वो at par है, discounted है या फिर at premium है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज वेन एवर यू आर सेलिंग समथिंग एट प्रीमियम ऑब्वियसली यू अर्न प्रॉफिट्स, बट इफ यू आर सेलिंग इट एट डिस्काउंट यू इनकर लॉसेस। तो अभी बेसिक चीज तो अपन ने सब समझ ली शेयर की क्या होती है, तो अभी लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट सर्टेन फॉर्मूलाज दैट आर यूज्ड। सो द फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी यूज इज द सम इन्वेस्टेड। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, सम इन्वेस्टेड मीन्स द नंबर ऑफ शेयर दैट यू हैव बॉट मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट ऑफ द शेयर। तो यहां पर जो था जो अपन ने पिछली इसमें कैलकुलेट किया था, राजू ने 1000 शेयर लिए थे, 100 रुपए का एक शेयर था, सो राजू हैज इन्वेस्टेड, द सम इन्वेस्टेड बाय राजू वुड बी 1 लाख रुपीज, द सम इन्वेस्टेड बाय रमेश वुड बी 50,000 एंड द सम इन्वेस्टेड बाय सुषमा वुड बी 30,000। सो ये हो गया हाउ वी आर गोइंग टू गेट द सम इन्वेस्टेड। अगर अपने को नंबर ऑफ शेयर फाइंड करने तो क्या करेंगे, सम इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द शेयर, और अगर अपने को वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड करनी है तो सम इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू। अभी व्हेन आई से वैल्यू इट शुडंट बी जस्ट वैल्यू बट इट शुड बी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। तो सारी चीजें जो कैलकुलेट होती है वो मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होती है, ये बहुत क्रूशियल है, बिकॉज अगर आपका लॉस है, अगर आपका ब्रोकरेज है, अगर ये सारी जो चीजें हैं दे ऑल वुड बी डिपेंडिंग ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। तो ये फॉर्मूले से अपन बाकी की चीजें भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है तो सिर्फ मार्केट वैल्यू को ये साइड में लाऊंगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो नंबर ऑफ शेयर्स विल बी इक्वल टू सम इन्वेस्टेड divided by market value of the share, और उसी जगह पे अगर मेरे को मार्केट वैल्यू निकालना है तो अगेन सम इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, तो एक ही फॉर्मूला जिसको अपन घुमा घुमा के यूज कर रहे हैं, pretty simple to understand. I hope you have understood majority of the things about shares. Dividend एक अलग सी चीज थी जो अपन ने थोड़ी जल्दबाजी में बोली, but dividend is obviously so dividend क्या है, तो ये वो profit है जो कंपनी दे रही है to the shareholders on yearly basis। दो चीजों में हो सकती है, या तो cost हो सकता है like directly cash हो सकता है, या फिर it can also be considered as the नंबर ऑफ शेयर्स, कि भाई इतने इतने नंबर ऑफ शेयर्स उनको ट्रांसफर हो जाते हैं, उनके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। ओके, बस यही शेयर मार्केट नहीं है। शेयर मार्केट इज अ वेरी एक्सटेंसिव सब्जेक्ट। सो इफ यू वांट अ थोरो information about share markets and investing in the share markets, please refer to a proper financial advisor, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता होती है। ये टॉपिक ये बुक में वो सारी चीज़ें कवर नहीं हो रही है। ये बुक में जस्ट अपन देख रहे हैं शेयर्स क्या होते हैं, डिविडेंड्स क्या होते हैं, और अगर अपन इन्वेस्ट करेंगे तो अपने को प्रॉफिट्स कैसे मिलेंगे। सो लर्नर्स, दैट वाज ऑल अबाउट शेयर्स एंड डिविडेंड्स। In the next video, we are going to see some examples on shares and dividends and how we can get profit from shares and dividends. This was Dr. Rishi from the Learners Academy. If you found this video interesting and helpful, please give us a thumbs up.
it keeps me motivated. Please subscribe to my channel and share it with your friends. Bye bye.